The numerical questions are so question number 1. If the plate microwave oven has the radius 0.15, प्लेट का रेडियस है 0.15 मीटर्स, ओवन के अंदर रखी जाती है, एंड रोटेट्स at the speed of 6 revolutions per minute. This is 6 revolutions per minute. Calculate the total distance traveled by the fly during a 2 minutes cooking period. Total distance in time 2 minutes 120 seconds, and this is 6 into 2 pi ओवर 60, ये बन जाएगा 0.2 पाई रेडियंस पर सेकेंड्स, 0.628, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट, तो ये 0.628 रेडियंस पर सेकेंड्स. अच्छा, थीटा, सिंस वी नो दैट S is equal to r theta and theta is equal to omega t. R is 0.15 into omega is 0.628 into t is 120 seconds, and we get the distance in meters, 11 meters. 11 meters is the correct answers. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, a circular drum of the radius 40 centimeters, circular drum of radius 40 centimeter, 0.4 meters, is initially rotating at 400 revolutions per minute, omega I 400 revolutions per minute. It brought to stop after 50 revolutions, omega F0 थीटा 50 revolutions के बाद comes to rest. डिमांड क्या, what is the angular acceleration and stopping time, alpha और time we have to calculate. हाँ, इसको हम चेंज करते हैं और 400 into 2 pi by 60, ये बन जाएगा रेडियंस पर सेकेंड. 40 into 40 multiplied by 3.14 divided by 3, 41.86, और ये 15 into 2 pi 100 pi 314 radians. Equation of motion, omega f square minus omega I square is equal to 2 alpha theta. Alpha is equal to omega f square minus omega I square over 2 theta is equal to 0 minus 41.86 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2314. We get the value of 41.86. 41.86 multiplied by 41.86 divided by 314 again divided by 2 equal to 2.79. This is 2.79 radians per second square. और for time, omega f omega I plus alpha t omega f minus omega I over alpha, this is t, 0 minus 41.86 over 2.79, this is t. So 41.86 divided by 2.79, 15 seconds. ये दो आंसर्स. तो क्वेश्चन नंबर 3
3 जो है वो करते हैं A string 1 meter long is used to whirl 100 gram stone in a horizontal circle at the speed of 2 meters per second. Find the tension in the string. Data है कि 1 meter long length of the string जो कि रेडियस का रोल प्ले करेगा 1 meters, mass 100 gram, 0.1 kilogram, whirled in a horizontal circle at the speed of 2 meters per second. तो tension in the string, since tension in the string provides centripetal force, that is T is equal to C is equal to mv square over r, 0.1 into 2 over r is 1. So this is 0.4 Newton. This is the answers to that questions. और इसके बाद अब next question number 4. Question number 4 है Moon revolves around the Earth in almost a circle of the radius 382,400 kilometers. Moon revolves round the Earth. So the orbital radius of the moon is 382,400. 382,400 kilometers. Or time period T is 27.3. 27.3 days. What is the centripetal acceleration? Centripetal acceleration, we know that T is equal to 2 pi over omega, then omega is 2 pi by T, 3.14 over T is 27.3 days, or into 24 into 3600, and this is angular speed. How much? 6.28 divided by 27.3, again divided by 24, again divided by 3600. This is point, so we can write 2.66 10 power 1 2 3 4 5 6 minus 6 radians per second. ये एंगुलर स्पीड है. और सेंटिपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर ओवर r या r ओमेगा स्क्वायर. 2.66 multiplied by this is 7.075 10 per minus 12. So multiplied by 382.4 22705.7 10 per minus 6 meters per second square, and this is this is 0.002, this is 0.0027 meter per second square. ठीक है. आर्बिट्रल रेडियस मून का है अराउंड द अर्थ इतना है, टाइम पीरियड इतना है. टाइम पीरियड से हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली और डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का, v स्क्वायर ओवर r या r ओमेगा स्क्वायर है, ये वैल्यूज पुट कर दिया और हमारे पास जवाब आ गया. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन 5 है मॉडर्न F1 कार कैन एक्सेलरेट फ्रॉम 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 100 किलोमीटर्स पर आवर. 100 into thousands over 3600. तो ये 1000 over 36, ये कितना बन जाता है 1000 by 27.77 मीटर्स पर सेकेंड्स. इसके बाद ये वेलोसिटी 0 से 100 किलोमीटर्स पर आवर तक इन 2.5 सेकेंड्स. टाइम है 2.5
सेकेंड्स के अंदर. व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ इट्स 170 millimeter radius. Radius 170 millimeter is 0.17 meter. इसका अल्फा निकालना है तो we know that Vf minus Vi is equal to 80. A is equal to Vf minus Vi by P. 27.77 minus 0 over T is 2.5. 2.5. 27.77 divided by 2.5 equal to 11.1 meters per second square. Since A is equal to R alpha, alpha is equal to A by R. A is 11.1 or R is 0.17. So divided by 0.17, 65.3. 65.34 radians per second square. So this is the answer 65.34. जो ठीक, no problem. ये है question number 5. This is the answer to this question 65 radians per second square. Question number 6. An electric motor is running at 1800 revolutions per minute. Omega 1800 revolutions per minute or it comes to rest in 20 seconds. Omega f0 20 seconds के अंदर. तो this is 30 revolutions per seconds. If the angular acceleration is uniform, angular acceleration is uniform, so find the number of revolutions it made before stopping. When alpha is uniform, then omega average, omega I f divided by 2. This is 30 plus 0 by 2 is 15 revolutions per second. Now theta is equal to omega t. 15 into time is 20. This is 300 revolutions. So the answer है 300 revolution. Question number 7. What is the moment of inertia of 100 gram sphere whose radius is 50? Mass is 100 kg. Sphere. Our radius is 50 centimeters. 0.5 meters. Moment of inertia 2 of the sphere 2 by 5 mr square 2 by 5 into 100 into 0.5 whole square. So we get the result is 10 kg meter square. 10 kg meter square. Now question number 8 or 8 है a rope is wrapped several times around the cylinder of 2 meters and mass 30 kg. Mass of the cylinder is 30 kg. Radius of the cylinder 0.2 meters. What is the angular acceleration of the cylinder? Alpha कितना होगा? And if the tension in the rope is 40 and it turns without friction, what is the angular accelerations of the cylinder if tension in the rope is 40? In the rope 40 Newton. A rope is wrapped round several times around the cylinder of the radius 0.2 and mass 30 kg. What is the angular acceleration of the cylinder if the tension in the rope is 40 and it turns without frictions? अच्छा, तो since tension provides centripetal force, that is T is equal to mv square over r, या this is mr omega square, then this is centripetal accelerations r omega square. This is 40 by mass is 30, तो ये हो जाएगा 1.33 मीटर्स पर सेकेंड और
A is equal to R alpha, then alpha is equal to A over R 1.33 divided by 0.2 divided by 0.2. तो ये 6 point, this is 1.33. फिर आते हैं, हमें मैस गिवन है सिलेंडर की और रेडियस गिवन है। अच्छा, ठीक हो गया। अल्फा निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, जबकि टेंशन इन द रोप इज 40 न्यूटन्स। तो इसको इस तरीके से दोबारा करते हैं। सिंस टेंशन इज 40, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा आर इंटू एफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर इज 1/2 mr स्क्वायर इंटू अल्फा, 2 इंटू आर इंटू एफ, एफ की जगह टी आ जाएगा और एम आर स्क्वायर जो है डिवाइड हो जाएगा। दिस इज अल्फा, आर कट जाएगा, 2t ओवर एम आर स्क्वायर, 2 टेंशन इज 40, मैस 30 और रेडियस 0.2 का स्क्वायर है, 0.2 का स्क्वायर है। सो द रिजल्ट इज 80 डिवाइडेड बाई 30, 80 डिवाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 0.2 अगेन डिवाइड बाई 0.2। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस इज 1/2 mr स्क्वायर इंटू अल्फा, देन अल्फा इज इक्वल टू 2r f m r स्क्वायर, नहीं है स्क्वायर, नहीं है, कट गया एक, तो इसलिए 80 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइड बाई 0.2, 13.3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यस, दिस इज 13.3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। और क्वेश्चन नंबर 9, what's the kinetic energy of 5 kg solid ball whose diameter is 15 meters if it rolls across the level surface with a speed of 2 meters per second? Mass of the solid ball, mass 2 kg, 5 kg उसकी mass है, diameter है, diameter is 15 meters, radius 7.5 meters और speed 2 meters per second. Kinetic energy rolls across the level surface with a speed of 2 meters. When the ball rolls across the level surface, it possesses translational as well as rotational kinetic energy. So the total kinetic energy is equal to translational kinetic energy plus रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/5 एम वी स्क्वायर, दिस इज 7/10 एम वी स्क्वायर, 7/10, mass is 5 और velocity है 2, 2 का स्क्वायर 4, 14 joules is the total kinetic energy of that ball. 14 joules is the kinetic energy of that ball. Now question number 10 है सिलेंडर जिसका डाया है 50 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, इज 0.25 मीटर, is at the top of the inclined plane 29.4 centimeter high, height of the inclined plane 29.4 centimeter is 0.294 meter and 10 meter long, is released and rolled down the inclined plane. Find the linear and angular speed at the bottom. Again, this is inclined plane with the height 0.294 meters. Here is the cylinder. We know that loss of potential, gain in kinetic, loss of
mgh is equal to half m v square plus half I omega square. mgh is equal to half m v square plus half. Moment of inertia of the cylinder is 1 by 2 m r square into omega square. This is 1 by 2 m v square plus 1 by 4 m v square. This is 3 by 4 m v square. This is m g h. Then v is equal to 4 by 3 g h. Then v is equal to 4 by 3 g h under root 4 by 3 g. height is 0.294 और इसका अंडर रूट. तो ये है अंडर रूट के अंदर 4 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.294 डिवाइडेड बाई 3 equal to 1.96 meter per second. Since v is equal to r omega, omega is v by r, 1.96 divided by 0.25 divided by 0.25 equal to 7.84 radian per second. This is the answer. लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. डिस्क विदाउट स्लिपिंग रोल डाउन द हिल ऑफ द वर्टिकल हाइट ऑफ. क्वेश्चन है डिस्क हाइट 1000 सेंटीमीटर 1000 डिवाइड बाय 100 इज 10 meters. हाइट इफ द डिस्क स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द हिल व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट द बॉटम. vi 0 vf unknown. We know that loss of potential, gain in kinetic, mgh half mv square plus half I omega square. This is half mv square plus half m r square. This is the value of the moment of inertia of the disc, or this is 1 by 2 mv square plus 1 by 4 mv square is equal to 3 by 4 mv square. That is mgh is equal to 3 by 4 mv square. Then v is equal to 4 by 3 gh. 4 by 3 9.8 into height is 10. This is under root में 4 multiplied by 98 divided by 3 equal to 11.4. Yes, this is correct. Meters per second. और क्वेश्चन नंबर है 12. क्वेश्चन नंबर है 12. A motor car is traveling at the speed of 30 meters per seconds. 30 meters per seconds. If it will have the dia of 1.5 meter, radius is 0.75 meter radius. Find its angular speed in radians and revolutions. We know that v is equal to r omega. Omega is v by r. V is 30 by r is 0.75. This is 40 radians per seconds. और इसको अगर हम रेवोल्यूशंस में लें तो 40 by 2 pi. This is 20 divided by 3.14 और this is 6.36 revolutions per seconds.